am in Coimbatore, and next day we will reach Ooty, which is around 2.5 hours. I am ready for checkout और इसके बाद हम निकल रहे हैं ऊटी, which is around 84.5 किलोमीटर. Now I am in Ooty and this is my hotel. Look at this room here. This is Darling Elk Hills and you can see यहाँ से इतना beautiful view आपको दिख रहा है. This is my first stop, which is Doddabetta Peak, and this is the highest mountain in the Nilgiri Mountains. और यहाँ से आपको पूरे शहर का ना एक व्यू देखने को मिलता है और बहुत ही खूबसूरत है. जहाँ पे आपको इस टी फैक्ट्री में एक टी कैसे बनती है वो प्रोसेस देखने को मिलता है, समझने को मिलता है. उसके साथ ही साथ एक सबसे बड़ी जो प्रॉफिट जो टी लवर्स के लिए स्पेशली है कि 6 कॉम्प्लीमेंट्री टी ड्रिंक्स आपको अलग अलग वैरायटी के यहाँ मिलते हैं. My favorite tea. So I'm just going to check it out. Nice. चॉकलेट फैक्ट्री में और यहाँ पे आप देख सकते हो सारा किस तरह का प्रोसेस है. एक तो ये भी समझाया गया है कि पहले कैसे ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग, फर्मेंटिंग, ड्राइंग, बर्निंग एंड उसके बाद के जितने भी प्रोसेस है चॉकलेट बनने के वो इसे बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है. प्लस इसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरी फैक्ट्री है और यहाँ पे देखिए एक मशीन भी दिखाई गई है जिसमें कैसे चॉकलेट्स बनते हैं. सो काफ़ी अच्छा है और स्पेशली चॉकलेट लवर्स के लिए तो अच्छा है. टी गार्डन में इसका रास्ता भी आपको टी फैक्ट्री और चॉकलेट फैक्ट्री होते हुए ही मिलेगा और यहाँ से आप देख सकते हो ये सारे टी के प्लांटेशन किए गए हैं और कितना ही खूबसूरत है. अगर आप ऊटी आए हो तो आप टी गार्डन जरूर जाइए. To taste this chocolate and if I find it good, I will definitely buy from here. Now I'm very hungry. Let's go to the restaurant. Can you please tell me about the restaurant? Well, this is first of all, this is a nice resort famous with the tourists called Sherlock. It is themed after Victorian era themed bedrooms and dining halls and so on. And by the way, it's named after the world's most famous fictional detective, Mr. Sherlock Holmes. So we are gonna come and try out its cuisine and let's enjoy. Yay!
and this is glass house. As you can see, I'm surrounded with so many beautiful flowers and colorful flowers. And yes, this is a perfect place for your Instagram photos. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone.